मंत्री महोदय तो नथिले ना टे बतई दौची इतिहास जातक 3 petitioners had filed separate 3 writ petitions in the High Court of Odisha challenging the validity of the Odisha Universities Amendment Act 2020 से केस को से आमर अमेंडमेंट को जोटा प्रथम रे आसीथला इन शेप ऑफ ए what you call ordinance ताकू चैलेंज हैला the University Grants Commission was implemented as one of the opposite parties along with the state of Odisha. One must know the because we are legislating आईन तैयारी करूचे एभली आईन तैयारी करिबा नहीं जो थरे आम भविष्य वंशधर माने सेतिबाई आमको दोष देवे 24/1/2022 रे the High Court of Odisha by a common judgment dated 24/1/22 disposed of the writ petitions. The writ petitions were dismissed and the validity of the Odisha Universities Amendment Act 2020 was upheld. The position of the government was upheld by none other than the Odisha High Court. तापर कौन है 2022 मसीहा जनवरी मासरू रिक्रुटमेंट चलिला ओपीएससी जरिया रे hundreds of teachers माने वैकेंसी रे थ्रू दी ओपीएससी रो कार्यक्रम द्वारा अपॉइंटमेंट पाइले बट ऑल ऑफ ए सडन इन दैट ईयर द यूजीसी फाइल्ड यूजीसी माने हिज एल्डर ब्रदर you can understand his elder brother filed SLP special leave petition before the Supreme Court. The Supreme Court passed order as to stay of the operation of the impugned order passed by the High Court for a period of 3 months. Madam जानिबा दरकार Supreme Court कौन कले 25/5/2022 रे जो रखिले से ऑर्डर 25/5/2022 special leave petition there shall be a stay of the operation High Court of the impugned order passed by the High Court for a period of 3 months least after 8 weeks. ये Supreme Court रो order आसिला जो थरे the entire operation came to a standstill. ये इतिहास से बिल लो 20/5/2022 the Supreme Court of India सेती बेले जतले बंद हैला ता परे एसएलपी फाइल हैला सेही केस पुणी उठिला मैडम केबे उठिला सेही सुप्रीम कोर्ट रे पुणी उठिला 23/1/2024 रे just before this government came into power. So what was the pronouncement? What was the referendum? Akumade apan janiba darkar. The referendum was heard Mr. K.K. Venugopal, learned senior counsel appearing for the applicant, that is state of Odisha. The learned counsel would advert to the prayer in IA 185450/2023 to say that the interim order passed by this court on 20/5/2022, 28/5/22, staying the operation of the impugned High Court judgment dismissing the writ petition should not stand in the way of the state government filling up the available vacancies of the teachers in the state universities through the Odisha Public Service Commission. This is not my saying. This is the pronouncement of the Supreme Court of India. एवं सेतिक बेले कौन है पुणी तक बड़ भाई बाहरी पड़े से बड़ भाई आसिले से कौन कहले आमको आ 10 दिन समय दि जाऊ आम कार्यक्रमटा करूँ मन रखु टाइमिंग केते बेले जनवरी मासरे एवं
10 दिन नेबा कार्यक्रम करी आज जाके करिले नहीं तो बड़ भाई तो पाखक सान भाई जाइए पेपर आम पढ़ी कौन है कि गृह को तो जनइले नहीं तुम एत लंबा स्पीच रे ना मुझे नेगोशिएट करके आसिली इन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट यू आर साइलेंट ऑन इट व्हाइल गिविंग आंसर प्लीज रिवर्ट बैक टू योर आभरमेंट्स एवं आपर कौन है सर तेणुक समथिंग इज सबजुडिस इन द अपेक्स कोर्ट इन द कंट्री से अवस्था भितर ये गोटे नुआ बिल आनिले जहाँ को नहीं आनी पारे नहीं सो द पोजिशन ऑफ लॉ एटी कौन आई वांट टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर इन चार्ज द फंडामेंटल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क can this bill be introduced in the legislative assembly when something is stayed by the Supreme Court of India? Have you taken the permission of the Supreme Court of India that we want to negate the provisions? Huh? And pen and light subjudice jota achi. This question arises because this bill is entitled the Odisha Universities Amendment Bill 2024, a bill further to amend the Odisha Universities Act 1989, is meant to amend the Odisha Universities Act 1989 as amended till 2020 as stated in the paragraph 1 of the statement of objects and reasons. कौन सीटा सर मैडम से ये आपण पढ़तु जोटा आमर नंबर 1 ने आसिला स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स सरकार रखछथि द ओडिशा यूनिवर्सिटीज एक्ट 1989 was enacted in the year 1989 and further amended till 2020. At present 15 state public universities coming under the administrative control of Higher Education Department are functioning under the Odisha Universities Act 1989. With passage of time, some of the existing provisions of the Act have to be amended to ensure the seamless administrative and academic functioning of the universities as well as aligned with the current educational scenarios. It becomes imperative to revisit and amend certain provisions of this Act. But that is why I have put up this. Therefore, the Act 1989 includes the amendments effected by the Odisha Universities Amendment Act of 2020 has been stayed by the Supreme Court. That is a part of the Odisha Universities Act 1989 to amend which the bill 2024 is proposed has been still sub judice in the Supreme Court and stayed. This is the factual position. Under this situation, can this amendment bill 2024 be introduced, considered? Can this question will not be asked by other petitioners? आमे आमर फ्यूचर जनरेशन पाई जा करिक जीवु से आम उत्तरदायी रही तेणु 1 step forward 2 step backward 2 step forward 1 step backward caution with aggression एमाने परमिशन नहीं have they taken the permission? If the government is so eager to introduce the amendment bill 2024 it should take steps to get the stay vacated or persuade the UGC to withdraw the case from Supreme Court. कौन तुमको किए मना कला तुम बड़ भाई पाकु जाइथलो ताकु काने फुसुर फुसुर करके कहि दै था तो भाई एटा को उड्र कर दियो बाट सफा हो जीवो तुम तो से कथा कल नहीं भाई को काने से कथा पकैलो नहीं. It appears September 1st 2024 Times of India that our Honorable Higher Education Minister had held discussion with the UGC officials on the government's proposal on amendments. Am I correct? Times of India. तमे कथार्ता करिछो. Partly correct. So you are holding brief for him. So, will Minister make a statement on this discussion with UGC? Has he requested them to withdraw their petition in the Supreme Court challenging Amendment Act of 2020?
In that case, the legal complication will not arise. Nokhare chhindiba jinso ko e batare no niya jao. Then, madam, the subclause B of the clause 3 of Amendment Bill 2024 is not necessary in view of the subsection 5 of the section 3 and section 24. I will come to those things, but before that, something else has also taken place. What has taken place? January 6, February 6, 2025, 6th सोमवार 6 January प्रारंभिक संस्कार मार्गदर्शिका उच्च शिक्षा को समावेशी करिबा. The UGC has come out with a draft resolution. What is the position? से resolution no connectivity ता आ सहित कोन ताकु मु टिके जदी न कहबी तबे will be doing injustice. एवं से injustice ता सर madam will go this way or that way. तो UGC January 6 रे बुधवार दिन ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन द्वारा आसिला गोटे रिजोल्यूशन ड्राफ्ट रिजोल्यूशन आपको 28/2/2025 माने 2 दिन 3 दिन तले पाखापाखि आज केते तारीख है 2 तारीख 28/2/2025 रे पब्लिक ओपिनियन रो लास्ट डेट थला एंड व्हाट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया डिपोज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन रोहित बेमुला केस ताकू मु आसीबी से ऑर्डर पेपर मध्य पढ़ी आपन सामने यूजीसी रो शॉर्ट टाइटल एप्लिकेशन ने देला आपन सुनो तो मैडम हाउ डेंजरस दिस पीपल आर. ये गुरुकुल कथा आमको जनमामु कथा देखौछथि. व्हाट इज देयर इंटरनल एंड हिडन एजेंडा. These shall apply to every university established or incorporated or under a central act, provincial act or state act, every institution including a constituent or an affiliated college recognized by the commission in consultation with the university concerned under clause F of section 2 of the University Grants Commission Act 1956 and every institution deemed to be a university under section 3 of the said act. ये nationalize कर देले भारतवर्ष सबु यूनिवर्सिटी को nationalize कर देले ए कार्यक्रम रे. आपको सबु राज्य रे तांकर निजर एनडीए पार्टनर माने मध्य आपको अपोज करछथि. टीडीपी योर जेडीयू देन अदर स्टेट्स माने रिजोल्यूशन कलेनी. तेलंगाना कत तेलंगाना एवं साउथ स्टेट्स 6 जन दे हैव गिवन ए रिजोंडर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये रिजोल्यूशन एपर्यंत जका बाहरी नहीं कारण आपको मध्य बीजेडी मध्य आमे आम तरफ मध्य करा जाय. तेणुकर व्हाट हैज हैपेंड द फॉल आउट by taking the absolute power to appoint vice chancellors without any participation by the state government. The central government has virtually nationalized the universities. The state government has no say in the selection and appointment of the universities that were, number 1, established by the state government, number 2, the benefit of the residents of the state and our state ro nijotwa, amara paribhasha, amara परिचय, amara अनुचिंता आदि किसी देखा जीवन नहीं मैडम. Number 3, funded by the state government. This is bizarre. This is unacceptable. Will not accept this. Will not stand the saffronization of education in Odisha. The draft regulations are a blow to the federalism and states' rights. आम राज्यर अधिकार को एमाने छड़े नबा पे व्यवस्था करूछंती एवं आपण मैडम जानिबे. The new draft regulations prescribe the mode of search cum selection and appointments of the vice chancellor. It will be through a 3-member committee comprising a nominee each of the chancellor, UGC and apex body syndicate, senate, board of management of the university. So Odisha ke na. What will happen? These people want to declare viceroys
the vice chancellors will be viceroys. जेमती ब्रिटिश अमल चली उपरू थोप देवे दिल्ली रू तमें ये थोप गिड़ापी बाध्य हम ये है गिड़बुनु बिकॉज इट इज इन कंकरेंट लिस्ट. It is in concurrent list. You cannot force it upon us. We have the right to have our own choice. आमे आम पिला को कोबली भाव में भल दे पारिबु शिक्षा एवं ओडिशार निजर निजत्व को किभली भाव में रखिकी कार्यक्रम करि पारिबु ताकू करा जाय पारिबो. The draft regulations if notified आसी नहीं पर्यंत कहीं आसी नहीं मु आपण पाखु आसुची. The use of the rights of the state governments and those who had established university like Utkal University for the benefit of the residents of the state and funds of the university out of the state's own resources. The draft regulations virtually nationalize the universities and the Messiah will take control of all higher education institutions of the country. Messiah Mahamanava. आपण बुझुतबे जाक सेमाने सेंट्रलाइज करके ना कार्यक्रम करूचथि. This is a clearly an attempt to undermine our education and also facilitate the lateral entry of their stews, their obscurantist elements at the helm of prestigious institutions in Odisha. As per the new draft guidelines, any industry experts, kiye luha lokod korthova, tama sagari jindad murdabad korthova, as well as senior professionals from public sector can be directly appointed as vice chancellors of the universities. जहाँ को पारिबो तमे ताकू नहीं आसीबो. प्रोफेसर ऑफ ताकू लिखिछथि कोन प्रैक्टिस प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एटा नुआ वार्ड एमाने जन्म करछथि. मैडम जा द्वारा कि प्रभु तो क्षति हवा पई जाउछि हमर एवं सेमाने कहउछथि नोटेबल 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 कंट्रीब्यूशंस. ये को माने who are these notable persons? Who are these? Yes, bill has something to be recorded with this. बिल को विषयटा शुण शुणी सार तेणुक जिते बड़े गोटे बिल एभली गोटे यूजीसी बिल रही से तमें कहीं दौड़िकिना कामटा करुच कौन पाई ए बिल कौन पाई आसुची व्हेन दिस ओवरआर्चिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ड्राफ्ट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन इज पेंडिंग. तमें आपको करिबो इफ इट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस उत्तर कौन रखिब से उत्तर तुम दे पार तुम मंत्री दे पारे. यू कैनॉट डू दैट. तेणु आज मैडम मु कहवाई चाहूँ वी कैनॉट अलाउ जो रखिले जे कौन सी प्रकार भाइस चांसलर मान को जो रखिबे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेंस हेले ओडिशार सबू यूजीसी ग्रांट बंद करदे. दिस इज ऑल्सो ए माने ड्राकोनियन लेजिस्लेशन जहाँ को आम अपोज करुचु एवं से मैडम मु निवेदन करी जे मंत्री महोदय शुड वेट जे पर्यंत जाके तुमर बड़ भाई जो आनी से रिजोल्यूशन डेट अच्छी. कारण आपण मैडम कहबी जे गत 28 तारीख दिन आमर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सी तांकर आभरमेंट रे कहले जे 28 तारीख जाके आमर अच्छी तापर गोटाए मास आमको दरकार से गोटाए मास जो सरीज से कार्यक्रम हम सेटा केमती कहले सुप्रीम कोर्ट रो ऑर्डर 28 तारीख सब कथा बुद्धि सहकार एडवाइजर मान बुझिकी नियो. इन सिविल नंबर 1149 2019 डेटेड है 28/2/2025. This matter was called on for hearing today, and in that, at the outset, Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General of India, points out that the University Grants Commission has prepared a draft regulation about which I was
quoting. Where is that gentleman gone? Ebang sei anusare the draft regulation which inter alia deals with the issues raised in the instant writ petition regarding Rohit Bemula case. Ebang seti se kohuchati je the petitioners, interveners or any other persons may submit their suggestions to the UGC which shall be duly considered. तो जदि आमे आम दल तरफ भारत वर्षर विभिन्न कोण अनुकोण ड्राफ्ट रिजोल्यूशन उपर दिया जाइछि which is encompassing this legislation that is on the floor today, why the government is trying to push through? The heaven shall not fall. Eita jadi asibo and if the government of India accepts the general opinion and with a draft जो commission जदि थिबो ताकू अपेक्षा तो ए पर्यंत जाके कलणी से पर्यंत जाके अपेक्षा करो तुम बड़ भाई तुमको जो दिन पठेई देबे हुलिया सही दिन ए कार्यक्रम हेई परिबो तेनु सही पाई this is ill juxtaposed. I oppose this because this will give a wrong signal, madam. In the outset, I will not allow the saffronization of the education system in Odisha. You cannot have your stools to be superimposed as vice chancellors, as professors, as assistant professors. ये विचित्र कथा जे एमटेक पाठ पढ़ीथबो से संस्कृतर प्रोफेसर हे जीवो ये यूजीसी रे अछि से जदि करिदेले तमे एठी करिबो देही पद पल्लव तमे जाके तुमरो रेकॉर्ड एटा नियो पढ़ी नियो हाँ if it is come it is in the mentioned in the draft itself. If you have not gone through it हेले करिबे किंतु एटा जो ड्राफ्ट रे अछि ताको मानि नियो vice chancellors of the university shall appoint vice chancellors. ये परस्पर टेकाटेकी कंपनी है कि एमाने कार्यक्रम करिया पे जाउछथि मैडम जहाँ अत्यंत दुखदायक. This is fraught with danger and you will see madam that the selection committee shall decide whether the research publications are in a peer reviewed journal. तमे रिसर्च पेपर दबो आम ओडिशा रे बहुत लोक बुलुचथि बहुत बाबाजी माने बुलुचथि जो डॉक्टरेट उपाधि पाउचथि डॉक्टर अमुक काली सकाळे सुरेश भाई तमे जदि इच्छा करिबो डॉक्टर सुरेश पुजारी जदि इच्छा करिबो डॉक्टर ये अछथि बहुत तमे भी डॉक्टर पाई जिवो तेनु करी नाइ तमे जदि नवा पाई इच्छा करूछ बर्तन तमरा ड्राफ्ट खोली देले तम बड़ भाई खोली देले जे तमे जागु पारिबा श्रीलंका जाईकी बाबा को भलिया तमे तमर नै आस पारिबा तेनु करी ये गोटाए षडयंत्र आम एगेंस्ट दी यूनिवर्सिटी एगेंस्ट दी एजुकेशन सिस्टम. तेणु मु निवेदन करी मैडम ये जो कार्यक्रम बर्तमान करा जाउची से कार्यक्रम को स्थगित रखी मंत्री महोदय गत दीटा सेशन आपको रखी थे मु निवेदन करी रिकनसिडरेशन करा जाऊ एवं ये ड्राफ्ट को मध्य किभली भाबरे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को किभली भाबरे ग्रहण करिछि से कथा तकर उत्तर रखिबे एवं सही अनुसार मु निवेदन करी मैडम नोटेबल कंट्रीब्यूशंस जो कथा रखा जाइछि दिस इज अ मिसनोवर हायर एजुकेशन को खराब करिबार ये व्यवस्था. तेणु आई अपोज दिस piece of legislation that is before the house and I conclude now. Second reading re that is why hurriedly न करिकी मु निवेदन करिबी गृहर समस्त पाखे निवेदन करी जे आपको सिलेक्ट कमिटी के दिया जाओ अपेक्षा करिबा हेवन शैल नॉट फॉल. तेणु सिलेक्ट कमिटी को गले सबू भाई माने जो माने अछंती गवर्नमेंट सिलेक्ट कमिटी करू
जमती पार्लियामेंट रे जेपीसी होची स्टैंडिंग कमिटी होची ताकू देखिबे तर्जमा करिवे केंद्र सरकार को बर्तमान गोटाए मास समय नहीं सी जहाँ को से सुप्रीम कोर्ट रे कहते ए समय भितर समय नहीं आपको तर्जमा करी कार्यकारी करने मु निवेदन कर आई वांट दैट दिस शुड बी सेंट टू दी सिलेक्ट कमिटी as has been declared by me.